Let's start now. Continue with the day. Very good afternoon, my dear students. Good afternoon, sir. Good afternoon. So we completed with question number 5. Is it? Now let us proceed with the next questions. Question number 6. Page number 291. Question number 6. Make the formats of bank reconciliation statement. दो format तैयार रखना. We will be solving a kind of two sums. Single page format will be fine. Okay. चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले before we continue with the question, always we will go with the small shortcut. जो एक छोटा सा शॉर्टकट हमने सीखा है, ठीक है. So what will be the point in that shortcut? Okay, what are the two effects? Remember कैसे याद रखते थे उसको? Debit, credit. Yes, Debit, सबसे पहले डेबिट, फिर नीचे लिखो क्रेडिट, Credit. then Debit. डेबिट, Credit. क्रेडिट. ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट हुआ. नेक्स्ट क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट एंड डेबिट. All right. Let us plot them. Let's separate them. Okay. इसमें से सबसे पहले ऊपर हेडिंग में सबसे पहला फर्स्ट विल बी कैश बुक. हम बनाते हैं कैश बुक. सेकेंड Passbook. बुक. एंड इन दोनों में आपस में बनती है, इसलिए आपने देखा होगा जो डेबिट है दूसरा क्रेडिट है. फर्दर नेक्स्ट let us write over there cash book. Very first option cash book का Bank balance. बैलेंस. सो राइट डाउन, ये होगा हमारा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. दैट इज डेबिट. यस Mahin, mute yourself. Second will be Bank overdraft. Next Deposit. deposits and also सबसे पहले चलो receipts. तो जब हम चेक यूज करते हैं वर्ड तभी आता है deposits. And Drawn on payments. yes, issue or drawn. Check word issue or drawn means you are making payment. So this will be the basic of cash book and passbook. All are clear with this? Now with the question and format. Question is question number 6, page number 291. बैंक reconciliation statement of श्री, ये हेडिंग लगाना नहीं भूलना, of श्री गौरांग as on 31/3/16. चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. If you know the answer, you can answer randomly in the between. Very first, we will have
Here, bank balance as per cash book. क्या अंडरलाइन करें? बैंक बैलेंस as per cash book. Double underline passbook. Double underline bank balance. Double underline passbook. पिछली बार कैश बुक दिया था, इस बार पासबुक वॉस ₹10,000। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सो ये 10,000 का अमाउंट यहां पर बोला ही नहीं है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। सो हाउ वी विल रिकॉग्नाइज, कैसे पता चलेगा? वी विल सी द शॉर्टकट। देखो यहाँ पर बैंक बैलेंस क्रेडिट। बैंक बैलेंस कहाँ पे लिखा हुआ है? दिस इज बैंक बैलेंस, वेरी फर्स्ट कॉलम of Passbook which credit passbook. So passbook has credit bank balance on which side? credit side. Credit side. Credit side. So everyone write down very first, no serial number. क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, you can mention it in between or from left alignment. Bank balance as per passbook, where shall we show? We'll show it on credit side. Credit side. 10,000. Bank balance as per pass. Any doubts? Further, which does not tally with the bank balance as per cash book. ये तो होना ही था, ये टैली नहीं होगा, इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? मैच करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फर्दर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड व्हाइल कंपेयरिंग द कैश बुक एंड पासबुक। जब आप कंपेयर कर रहे थे तो इंफॉर्मेशन मिली। व्हाट इज दैट? फर्स्ट, अ चेक ऑफ 7,000 इज ड्रॉन। अंडरलाइन चेक। चेक की भाषा हमेशा होगी या तो ड्रॉन या तो डिपॉजिट। इश्यूड, check is drawn, underline, recorded in cash book but not given to creditor, underline not given to creditor। आपने जिसको पेमेंट करना था उसके लिए चेक बना के रखा हुआ है ना? चेक तो इश्यू कर दिया, चेक बना के आप ही के ड्रॉर में रखा हुआ है। पेमेंट लेने अभी तक सामने वाली पार्टी, आपका क्रेडिटर, अभी तक आया नहीं। तो सबसे पहले एनालाइज करो क्या हो गया है। कहां पर इश्यू? ड्रॉन, चेक हो गया, चलो ड्रॉन हो गया तो वी विल गो विद द फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन में कैश बुक में एंट्री हो गई है, इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। आपने दिया नहीं है क्रेडिटर को, क्या आपके बैंक में से इसका बैलेंस माइनस हुआ? क्या नहीं हुआ? नहीं। फिर से कैश बुक में क्रेडिट हो गया और पासबुक में डेबिट हुआ नहीं। तो वी विल डेबिट, वी विल डेबिट। देखो क्रॉस जहां पे है आपको वो करना है जो नहीं हुआ है। सो वी विल डेबिट। राइट डाउन नंबर 1, check drawn, or you can use the word issued, recorded in cash book, recorded in cash book but not given to creditor। बैंक में से डेबिट हुआ नहीं, सो वी विल डेबिट। मैच करने के लिए अब डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट 7,000 अमाउंट। रेज योर हैंड, एनी डाउट्स विद दिस? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? एवरीवन, नेक्स्ट।
A check was deposited. Second, a check of rupees 12,000 was deposited. Underline check. Underline the word deposit. अभी हमने डिपॉजिट किया है हमारे बैंक में 29 मार्च को. इस मार्च के महीने का जो हम बीआरएस बना रहे हैं 29 मार्च को चेक डिपॉजिट किया विच इज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 1/4/16. क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 1/4/16 मतलब बैंक ने क्रेडिट किया पर कैश बुक में नहीं हुआ. बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया पर कब किया नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. नेक्स्ट मंथ में किया मतलब इस महीने. ध्यान से सुनना 31 को जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो मिसमैच है ना या नहीं है. मिसमैच इज देयर मतलब इस महीने क्रेडिट हुआ नहीं. क्रेडिट तो हुआ पर कब हुआ अगले महीने अप्रैल की फर्स्ट डेट को 31 मार्च तक कुछ भी क्रेडिट हुआ नहीं. सो सिंपल इट इज रियली वेरी सिंपल. फिर भी चलो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से. सो चेक क्या हो गया डिपॉजिट हो गया. चेक डिपॉजिट हो गया इसका मतलब कहाँ पे एंट्री आएगी डिपॉजिट हो गया मतलब आपने कैश बुक में डेबिट कर दिया. यस पर बैंक में पासबुक में क्रेडिट हुआ नहीं. सो व्हाट वी विल डू वी विल क्रेडिट. हम क्या करेंगे हम करेंगे आर यू क्लियर विद दिस. सो राइट डाउन क्रेडिट 12,000 और यहाँ पर तो स्टेटमेंट ही जवाब दे रहा है आपको. चेक डिपॉजिटेड. आप चेक डिपॉजिट करते हो कैश बुक में डेबिट. बैंक इज द रिसीवर. चेक डिपॉजिटेड विद बैंक. नाउ यू कैन राइट हियर नॉट क्रेडिटेड टिल 31 मार्च. समझने के लिए जितना हो सके उतना लैंग्वेज आप सिंपल कर सकते. नॉट क्रेडिटेड टिल 31 मार्च तो आपको अब करना है क्रेडिट. You can also write credited on 1/4/16. It's also correct. ठीक है नेक्स्ट. Anyone having any doubts up till here? इन दो तक किसी को भी डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड. होप सो कोई डाउट नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. बैंक हैज पेड ₹6,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज नोन टू गौरांग. पेमेंट हुआ अंडरलाइन पेड. अच्छा बैंक ने पे कर दिया तो एंट्री कहाँ हो जाएगी किस बुक में एंट्री हो जाएगी पासबुक पासबुक में एंट्री हो गई. सो पेड मतलब पासबुक में एंट्री हो गई विच इज नोन टू गौरांग. गौरांग को कब पता चला 1/4/16 को पता चला मतलब नेक्स्ट मंथ है ना. तो नाउ वी विल से सी द शॉर्टकट सॉल्यूशन. पेमेंट इज हियर. पेमेंट किया. अच्छा पासबुक में पेमेंट हो गया कैश बुक में से बताया नहीं. पेमेंट वेयर विल बी रिकॉर्डिंग कैश बुक वी क्रेडिटिंग कैश बुक नहीं. पासबुक में डेबिट हो गया. पासबुक में से बैंक में से पैसा कट गया डेबिट हो गया बट पासबुक में एंट्री हो गई. कैश बुक में क्रेडिट हुआ नहीं. सो राइट डाउन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक not recorded in cash book till 31st March. पेमेंट किया तो पेमेंट आप कैश बुक में बताते हो क्रेडिट साइड. डू इट 6,000. Next one is
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा होता है जनरली, ये बहुत ज्यादा होगा। अ कस्टमर हैज डिपॉजिटेड डायरेक्टली, a customer has deposited directly with the bank 5,000 which is not recorded in cash book, underline not recorded in cash book। डायरेक्ट मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री कहां पे हो जाएगी बच्चों? एंट्री कहां पे हो जाएगी? पासबुक। डेबिट। पासबुक में एंट्री हो गई, पर कैश बुक में हुई नहीं। मैच डायरेक्ट डिपॉजिट, क्या आएगा इसका इलाज? हाउ वी विल डू डिपॉजिट्स? वर्ड है डेबिट। डेबिट। यस, Debit side. डिपॉजिट पासबुक में हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं, क्या रह गया? डेबिट। सो वी विल डेबिट। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। नाउ यू आर एबल टू फॉलो दिस। सो राइट डाउन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर not recorded in cash book। कैश बुक में रिसीव हुआ, रिसीट साइड, डेबिट साइड लिखा नहीं, 5,000। ऐसा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली देखा जाता है कि अगर आप रेगुलरली फीस भर रहे हो हमारे ऑनलाइन में, अब तो ऑनलाइन हुआ ना इस साल, तो हर साल हम पीडीसी लेते थे, इस साल आपने ऑनलाइन पेमेंट किए होंगे, राइट? तो आप अगर 5,000 या 10,000 15,000 का इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो आपने इस मंथ का इंस्टॉलमेंट दे दिया, पर आपने कैलाश सर को बताया नहीं, तो सर को तो जब पासबुक में दिखेगा एंट्री तभी पता चलेगा। ऑलराइट, so this is very practical। next, bank has credited interest and recorded in passbook, not recorded in cash book। ये तो हमारा सादा सिंपल सबसे बेहतरीन ट्रांजैक्शन है। बैंक ने जो किया हम उसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे? बैंक हैज credited, so we will debit interest is my income, so इस इनकम को रिकॉर्ड करेंगे रिसीट साइड, रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो कैश बुक में कहां लिखें? डेबिट। आंसर आ गया, यहीं पर आंसर आ गया, नो नीड टू इवन गो विद द शॉर्टकट। सो राइट डाउन इंटरेस्ट, bank interest, I will use the word bank interest credited by bank in passbook, not recorded in cash book। पासबुक में क्रेडिट हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो उसे 200 ऑन डेबिट साइड। डेबिट हुआ नहीं, so we will debit। next, a check of 6,700 deposited with bank and dishonored, mark this important। ये 6 नंबर का ट्रांजैक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है भाई हर बार? और ये क्वेश्चन भी 6 है। चलो ठीक है, समझते हैं इसे। check of 6,700 deposited with bank is dishonored, double underline the word dishonored, of which the information is received on 1/4/16। तो सर यहाँ तो सिर्फ लैंग्वेज ही दे दी है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि कैश बुक में हो गया या पासबुक में हो गया। ऐसी चीटिंग कौन करता है सर? ऐसा थोड़ा थोड़ा ही लिख के भेज देते हो। हाँ, ऐसे में तो एग्जाम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द टेक्निकल टर्म। जब चेक आपका डिसऑनर होता है उस वक्त क्या होगा? सो फॉर दिस माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वायर योर नॉलेज ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक में डेबिट रिसीट साइड, क्रेडिट पेमेंट साइड, और वही चीज पासबुक में उल्टी हो जाती है। पासबुक में डेबिट विल बी पेमेंट साइड
क्रेडिट विल बी Credit side. साइड, है ना। मेरा बैलेंस बढ़ा मतलब मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, आई रिसीव, और यहाँ से डेबिट हुआ मतलब आई पेड। सो ये चीज यहाँ पर समझनी है आपको। सबसे पहली चीज टेक्निकली समझो क्या होता है। कभी भी चेक डिसऑनर होता है तो पहली चीज आपका बैंक में तो पैसा आया नहीं, बाउंस हो गया, ठीक है। तो चेक अगर बाउंस हो रहा है, बैंक उसकी एंट्री क्या करता है, बैंक आपके अकाउंट में सबसे पहले डिपॉजिट करेगा और तुरंत दूसरे सेकंड में वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये बात समझना। आपका पासबुक अगर कभी देखा हो जहां पर चेक डिसऑनर हो गया हो, है ना, तो इसमें क्या होता है, आपके खाते में तो पैसा आया नहीं, आपके खाते में पैसा तो आया नहीं, बट इट विल नॉट शो 0 0। ऐसा नहीं होगा। क्या होता है उसमें, आपकी जो पासबुक है, लेट अस से यू हैव अ पासबुक लाइक दिस, रेक्टेंगल वाली पासबुक, तो उसमें आपका बैलेंस है, आपका बैलेंस अभी है फिलहाल 10,000। एक्सक्यूज मी सर। यस, अरे सो जाओ जाके। नाउ जब आपका बैलेंस है 10,000, आफ्टर योर बैलेंस what will happen over here, you have two column deposits and withdraw, ठीक है। सो पर्टिकुलर्स में आपका बैलेंस लिखा जाता है, दैट चेक नंबर सो एंड सो विद दिस अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड। मान लो 5,000 का चेक आपके अकाउंट में डिसऑनर हुआ तो सबसे पहले एंट्री आएगी 5,000 डिपॉजिट की, और तुरंत विद इन दी अदर सेकेंड सेम चेक नंबर, दिस सेम एंट्री विल बी विड्रॉन। मतलब आपके बैलेंस में बैलेंस बढ़ के तुरंत 15,000 हुआ और तुरंत कम होकर के फिर से 10,000 हो गया। पता चल रहा है एंट्री कैसी हो रही है। मतलब बैंक क्या करता है, डिपॉजिट भी किया, तुरंत विड्रॉ भी कर लिया। इसका मतलब चेक आपका क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, है ना। तो जब चेक इस तरह डिसऑनर होता है, बैंक में पैसा तुरंत आया, तुरंत बैंक वाले पैसा भी निकाल लिया। तो इससे पता चले कि बैंक ने क्लियरेंस करने की कोशिश की थी, बट देयर वाज सम एरर ड्यू टू सिग्नेचर मिसमैच। कई बार होता है आपने पहले पुरानी सिग्नेचर की थी, अब आपका सिग्नेचर चेंज हो गया है, ड्यू टू ओवर राइटिंग समटाइम्स चेक गेट्स डिसऑनर, टाइम बढ़ हो जाता है, चेक आपका 90 डेज का ही वैलिडिटी रखता है। तो कई बार आपका चेक पड़े ऐसे टाइम बढ़ हो गया, आपने चेक डिपॉजिट ही नहीं करवाया, और उसके बाद अगर करवाओगे तो होगा नहीं। देयर आर मेनी रीजंस, राइट। सो व्हाट विल हैपन, अब टेक्निकल टर्म्स में समझो। वेरी फर्स्ट व्हाट विल हैपन, चेक आपने, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, कंसेप्ट समझ गए, क्वेश्चन पढ़ो। चेक ऑफ 6700 डिपॉजिटेड विद बैंक, डिपॉजिटेड विद बैंक। सबसे पहली चीज बैंक को जाने दो, आपने चेक का क्या किया, बैंक में चेक का क्या किया, बैंक में Deposit. डिपॉजिट किया। तो इसकी एंट्री सबसे पहले कहाँ पे आ जाएगी, कैश बुक में या पासबुक में, कहाँ पे आएगी एंट्री इसकी? सबसे पहले आपने डिपॉजिट किया, यू आर बिजनेस, यू आर मेकिंग कैश बुक, तो सबसे पहले एंट्री कहाँ पे आएगी, कैश बुक। और कैश Cash book. यस, डिपॉजिट कैश बुक में क्या कर देंगे पहले, डेबिट। So we will debit in cash book. How much amount? 6,700 डेबिट। अच्छा, जो आपने यहाँ पे डेबिट किया वो क्या करना पड़ेगा, पासबुक में भी Passbook. Credit. Credit. 6,700 क्रेडिट हो गया। अब ये वाला कंसेप्ट देखो, तुरंत डिपॉजिट हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ा और तुरंत उन्होंने डेबिट भी किया। तो व्हाट दे विल डू, they will immediately reverse due to dishonor। उन्होंने क्या कर दिया, 6,700 Debit. डेबिट कर दिया। आर यू गेटिंग दिस, 6,700 डेबिट कर दिया।
यहाँ पे भी रिवर्स होना चाहिए, यहाँ पे भी डिसऑनर रिवर्स होना चाहिए। यस, पर ये जो एंट्री है यहाँ पे रिवर्स हुई नहीं। कैश बुक में क्या नहीं हुआ? क्रेडिट 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 हुआ नहीं। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रेडिट 6700। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? सिंपली पासबुक अगर नहीं याद रखना है, कैश बुक में चेक डिपॉजिट किया, डिसऑनर हुआ नहीं, सो कैश बुक में डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट किया नहीं। सो नाउ वी विल क्रेडिट इन BRS. Write down. First on credit side, 6700. Check deposited with bank dishonored which is not recorded in cash book. Not recorded in cash book. All clear with this? Raise your hand. Anyone who is not clear with this, please इसे important mark करें. Here itself mark it important. ये जो important mark करवा रहा हूँ ये आपको एक बार रेफर करने होंगे. चलो. Anyone having any doubts? Right? अब फाइनली जिन्हें शॉर्टकट सीखने हैं उनके लिए बता दें, दिस चेक डिपॉजिट विल बी ऑलवेज डेबिटेड इन कैश बुक. क्या बोल रहे हैं सर? सर ने ये कहा दिस चेक डिपॉजिटेड विल बी ऑलवेज डेबिटेड इन कैश बुक. डिसऑनर होगा तो हमेशा क्रेडिट किया जाएगा. सो जनरली चेक डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन कैश बुक से मिल रही है, पर डिसऑनर ये तो हमें बैंक बता रहा है, डिसऑनर की इंफॉर्मेशन बैंक देता है, तो ऑलवेज इट विल बी मिसिंग दिस वन, ऑलवेज इट विल बी मिसिंग इन कैश बुक. कभी भी कैश बुक में आपका जो चेक डिपॉजिट है ये मिसिंग हो रहा होगा. ठीक है? सो ऑलवेज चेक डिपॉजिट डिसऑनर यू विल रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड. ये भी एक तरह का आप सूत्र समझ सकते हो. दिस विल बी अ काइंड ऑफ फॉर्मूला फॉर यू. Checks drawn, underline the word drawn. Checks drawn for rupees 18,000, but out of these checks of 6,000 were presented. But out of these, mark this one important, checks of 6,000 were presented for payment till 31st. Everyone, this question number 7 says you have issued a check, you have drawn. आपने कुछ चेक थे जिसे पेमेंट के लिए आपने बनाए, कुछ चेक आपने इश्यू किए, तो पेमेंट करने के लिए 18,000, अंडरलाइन 18,000 everyone, make the payment of 18,000 of check. So 18,000 का पेमेंट आपने किया, कैश बुक में उसकी एंट्री क्रेडिट हो गई. But now, out of these checks, 6,000 were presented for payment. पेमेंट के लिए सिर्फ 6,000 के ही चेक प्रेजेंट हुए, सिर्फ 6,000 के ही चेक प्रेजेंट हुए. इसका मतलब जो आपका पासबुक है इसमें काफी सारे, सबसे पहले तो ये बात समझने जैसी, 18,000 के चेक है, हो सकता है वहां पर 3,000 के भी चेक होंगे, 6,000 के भी चेक होंगे, 12,000 के भी चेक हो सकते हैं. जिसमें भी पॉसिबल, 12,000 तो और ज्यादा हो गया सर. ठीक है, 6 3 18, 10,000 के भी चेक हो सकते हैं. तो
इन सभी चेक में से सिर्फ 6,000 का जो चेक है वो प्रेजेंट हुआ, बाकी के हुए नहीं। तो कैन आई से दिस 6,000 हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये जो 6,000 का चेक है उसकी एंट्री कैश बुक में क्रेडिट भी हो गई, पासबुक में डेबिट भी हो गई। ये 6,000 पासबुक में डेबिट हो गया। ये 6,000 का कोई मिसमैच आएगा नहीं। मिसमैच किस चीज का आएगा? व्हाट इज नॉट डन येट। डिफरेंस देखो, 18,000 माइनस 6,000, ये जो 12,000 है ये डेबिट हुआ, ये डेबिट हुआ नहीं। सो मिसमैच किस चीज का आएगा? दिस इज नॉट डेबिटेड। हाउ मच नॉट डेबिटेड? अंडरलाइन 6,000 credited. Underline 6,000 were presented till 31st. तो 31st तक सिर्फ 6,000 ही प्रेजेंट किए गए, therefore रिमेनिंग 12,000 अभी तक डेबिट हुए नहीं, पासबुक में से डेबिट हुए नहीं। सभी को समझ में आ रहा है? चलो एक बार फिर से। चेक हैज बीन इश्यूड, आपने पेमेंट कर दिए। सो कैश बुक में से ये 18,000 की एंट्री लग गई। 18,000 हैज बीन क्रेडिटेड इन कैश बुक, आउट ऑफ विच 6,000 आर प्रेजेंटेड टिल पेमेंट, बट रिमेनिंग 12,000 आर नॉट येट प्रेजेंटेड। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? विच इज not yet presented. So we will say 12,000 is not yet debited. So let us write 12,000 which is not yet debited. So debit हुआ नहीं, write down 12,000. What will mention? Checks issued but not presented for payment by creditors. Not credited by इन चेक्स को प्रेजेंट नहीं किया गया, राइट? सो इट मीन्स व्हेनेवर दीज चेक्स आर इश्यूड, आपने तो सारे चेक इश्यू कर दिए, सारे पेमेंट्स क्रेडिटर्स लेके चले गए, पर तो ये कुछ क्रेडिटर हैं 12,000 के जिन्होंने अभी तक अपने ये जो पेमेंट्स हैं डिपॉजिट करने के लिए चेक को अपने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया है, नॉट प्रेजेंटेड बाय क्रेडिटर्स। तो जब तक वो अपने बैंक में डिपॉजिट करने के लिए करेंगे नहीं, हमारे बैंक में से डेबिट होगा नहीं। All right, next, number 8. Checks of rupees 32,000 were deposited with bank. Underline checks of 32,000 were deposited. Deposit word को underline कर दो, double underline. Deposited with bank. बैंक में डिपॉजिट कर दिया, out of which checks of 7,000 are credited in passbook till 31st. लैंग्वेज समझो, 31st तक कितने के चेक क्रेडिट हो गए? 7,000 के चेक क्रेडिट हो गए। इट मीन्स रिमेनिंग, इट मीन्स रिमेनिंग हाउ मच? नॉट क्रेडिटेड। Remaining how much? Not credited. Do it in a calculator. 32 minus 7, 25. The remaining 25 is not yet credited. All right.
Now, therefore, remaining 25,000 is not credited, चलो जिन्हें ये समझना है, let us understand it with the help of example. First of all, look into the question. With your question, checks of rupees 32,000 were deposited. आपने चेक को डिपॉजिट कर दिया तो एंट्री हो गई 32,000 की कैश बुक में. यू विल रिकॉर्ड चेक्स ऑन डिपॉजिट on debit side. You will record checks deposited on debit side. Further, you will also have 32,000. 7,000 were credited in passbook. पासबुक में भी इसकी एंट्री हो जानी चाहिए थी क्रेडिट साइड, बट ओनली 7,000 इज क्रेडिटेड. बाकी का 25,000 अभी तक क्रेडिट हुआ नहीं, नॉट क्रेडिटेड. ऑलराइट, सो ये बाकी का 25,000 जो क्रेडिट हुआ नहीं, व्हाट इज नॉट येट डन, इट इज नॉट क्रेडिटेड, सो वी विल क्रेडिट. सो लेट अस क्रेडिट into the books 25,000. सबसे पहले क्रेडिट साइड लिखो 25,000 and write down checks deposited but not yet credited by bank. चेक डिपॉजिट कर दिए पर बैंक ने क्रेडिट किए नहीं. रेज योर हैंड, एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट अप टिल हियर. Ninth, a check of rupees 1,800 was deposited with bank, underline deposited with bank, which is not recorded in cash book. चेक आप डिपॉजिट कर रहे हो पर कैश बुक में ही आपने रिकॉर्ड किया नहीं. सो नाउ हियर फ्रॉम दिस शॉर्टकट आल्सो यू कैन गेट इट. चेक आपने डिपॉजिट किया पर कैश बुक में ही डेबिट किया नहीं. चेक आपने डिपॉजिट तो कर दिया पर कैश बुक में ही डेबिट किया नहीं. So what we will do? We will now debit. So write down check deposited but not recorded in cash book. 1,800. You have not debited itself in cash book. Any doubts? Further. Last one. Bank has debited rupees 20 in passbook for bank charges, which is not recorded in cash book. Bank charges और bank interest वाला हमेशा what we do? We do opposite. अब यहाँ पे देखो bank has debited, double underline the word debited. We will credit. So mark it bank charges not recorded. Bank charges not recorded in cash book. रुपीज 20 कैश बुक में पेमेंट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, विच वी डिड डू.
Let us do with the balancing. Find it which side is higher. Which side will be higher? Credit side. Debit and credit both. चलो दोनों का total करो. Credit must be higher. 25, 10,000, 12,000. So credit side, I am getting a total of 59720. Everyone, जैसे आप balancing करते हो 59720. Higher total on both the side. Higher total on both the side. Minus all the debit items. 59720 minus 7,000 minus 5,000 minus 200 minus 12,000 minus 1,800. कितना आया final? Yes, I'm getting the answers on chat. How much? 33720. 33720. Very nice. तो ये जो 33720 है ये बैलेंस बच गया. ये बैलेंस बच गया. Now finally, everyone, you'll answer here. You can start with passbook. आपने start किया था passbook, so we will end with Cash book. yes, will end as per cash book. So what is here as per cash book? Debit balance. Debit balance as per cash book. ये cash book में कहाँ पे? Cash book में कहाँ पे? This is on debit side. Debit side. Cash book का debit तो हमको याद है. It is Bank balance. bank balance. Cash book debit will be bank balance. देखो starting और ending आप यहाँ पे करेंगे हमेशा. Alright. So this will be debit balance. It means bank balance as per cash book. Bank balance as per cash book. Are you all okay with this? Now we have already completed with the main and important questions of this chapter. So everyone solve. Illustration number 5. इसका क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे मिलेगा. बट इन 3 वी हैव एडलेस मेथड. बच्चों ध्यान देना, वी हैव एडलेस मेथड. ठीक है, पर एडलेस मेथड आपको आपके सिलेबस में नहीं करना है. क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड एज पर डेबिट क्रेडिट जैसा हमने सीखा है. ठीक है, तो एडलेस वाले 2 इलस्ट्रेशन आपको दिए हैं, सॉल्यूशन दिए हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 2 and 3 एडलेस मेथड दिया है और उसी का उन्होंने सॉल्यूशन डेबिट क्रेडिट से किया है इलस्ट्रेशन 4 and 5 पे. ठीक है, तो आपके लिए क्या रहेगा? इलस्ट्रेशन नंबर 4 and 5 विल बी योर होमवर्क. इलस्ट्रेशन नंबर 4 and 5 इसके क्वेश्चन है. इलस्ट्रेशन नंबर 11 में, सॉरी, इलस्ट्रेशन 2 and 3 में इसके क्वेश्चन. All right. So finally we complete here. At the end, मजा आया आज. So let us finish now. आज के लिए इतना ही काफी है. We'll meet again on Saturday. Hope so. तब तक अकल ठिकाने आ जाए. All right. So stay happy, stay motivated, keep learning. Goodbye everyone. अच्छा म्यूट है आज सब लोग, ऐसा अच्छा नहीं लगता. Goodbye everyone. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir.